We've talked about various health topics like the Ayurvedic diet, the prostate, joint pain, immunity, PCOS and PCOD, and so many more other relevant topics. And today, in our ever evolving world where health concerns continue to grow, we're shining a spotlight on a topic that concerns many, which is diabetes. Recently, in fact, on 14th of November, we celebrated World Diabetes Day. That is how relevant it is. It has its own day. So, today we're delving into the topic that interests ancient wisdom and modern health, intersects these both, and we'll dive into diabetes and Ayurveda. In a world where chronic disease is on the rise, understanding alternative approaches to managing conditions like diabetes becomes crucial. Today, we'll explore the time honored principles of Ayurveda and its relevance in diabetes management. Ayurveda recognizes diabetes as madhumeha, a condition characterized by an imbalance in the body's doshas, particularly the kapha and the pitta doshas. So, this is what we'll really understand and dive into. And to help us understand this, we have Professor and Dr. Harimohan Chandola. He's the chairman of three distinguished Ayurvedic committees, the CH Brahm Prakash Ayurved Charak Sansthan in New Delhi, the Research Committee and the Institutional Ethics Committee at Uttarakhand Ayurved University in Dehradun. He is also the Doctor of Medicine in Ayurveda with a PhD in Ayurveda and a diploma in yoga from Banaras Hindu University. Dr. Chandola was previously employed by the government of NCR Delhi as the Director Principal of the Brahmaprakash Ayurved Charak Sansthan. In addition, he served as the hospital director and professor at Uttaranchal Ayurvedic College and Hospital on the Rajpur Road in Dehradun. He is also the head of the IPGT and RA department at Gujarat Ayurved University in Jamannagar. And he's also held various positions as chairman, coordinator, and nodal officer of several reputed research centers. So, Doctor, thank you so much for your time and for being here. I'm sure we have a lot to learn from you today. So, without further ado, let's dive into some of the pressing questions we have today for Doctor. So, Dr. Chandola, just to begin, how does Ayurveda approach diabetes? Ayurveda has described the syndrome of Prameha in detail, and Prameha and Madhumeha, both terminologies are referred for this present day known diabetes mellitus, metabolic syndrome, and obesity. Ayurveda has described that two important features, Prabhut Mutrata and Avil Mutrata. A patient is passing urine in excessive quantity that highlight the metabolic origin of disease. And later on, there is a turbidity in the urine that refers the involvement of the local urinary tract. And the patient may have some genetic predisposition. So when patient get this disease from early childhood, that is described as Sahaj Prameh and Jatah Prameh. That is actually the type 1 diabetes, which is referred as insulin dependent diabetes. Then the second type is when patient can develop later on because of the defective diet and defective lifestyle. That is known as type 2 diabetes or acquired diabetes or non-insulin dependent diabetes. So the patient may be obese in type 2, patient may be asthenic and weak in type 1 diabetes. Three types are described: Kapha Prameha, Pitta Prameha, and Vata Prameha, which is well comparable to early diabetes and acute stage of the disease and chronic diabetes. So this can be precipitated in a stage wise, or it can be directly any stage can be precipitated. So that depend upon genetic predisposition and then defective diet and lifestyle. Uh, Various clinical features are described as sweetness in the mouth, burning sensation in hand and feet, swarming of the ants in the urine of the patient, and dryness in the mouth, throat, palate. So that highlight the concept of polydipsia, polyphagia, and glycosuria. Patient is passing something sweet substance in the urine that is attracting the ants. So at that time,
urine sugar estimation was not there like today, but observation was there कि पेशेंट कुछ ना कुछ मीठी चीज यूरिन में पास कर रहा है जिसके कारण उसमें चींटियां लग रही हैं. Okay, very interesting. So, Ayurveda, like modern medicine, knows the different stages, also talks about, the genetic predisposition that can exist or just health, lifestyle and health factors. So, that is how we view it as well. So, doctor, you mentioned a few doshas. So, how is dosha related to diabetes? Doshas are basically, the cosmic sun is represented as a pith in our body. Okay, Cosmic moon is represented as a kapha or shleshma in our body, and cosmic air is represented in our body as a vat. So, vat, pitta, and kapha, these are the three doshas or humor which regulate the entire physiology of the body. Yat pinde tak brahmande. What is happening in the cosmos, that is happening in our body itself. So, in that way, Ayurvedic physiology is well comparable or well integrated with the cosmic physiology. In case of this disease, the disease is tridoshic in nature. All the three doshas are involved, Vata, Pitta, and Kapha. But mainly it is a Kapha dosh. So, okay. if these doshas are in balanced state, we are healthy. But when this equilibrium of Vata, Pitta, and Kapha is disturbed, then we are made susceptible for the disease and disorders. Okay, okay. So, like Doctor said, we are a part of the universe, but we can't forget that the universe is also a part of us. So, that is exactly where the doshas come into play. You can, in fact, visit livayu.com to understand what your doshas are on the free dosha tool that is available. But of course, to dive deeper into this and understand a lot more, we suggest consulting with a doctor like Dr. Chandola. So, moving on. Doctor, can Ayurvedic treatments or Ayurveda treat diabetes? As I told you, that the type 2 diabetes is basically because of the defective diet and defective lifestyle, as mentioned in the Ayurvedic literature all as well. So, yes, Ayurveda can treat diabetes. We have Ayurvedic classics have recommended dietary modification, lifestyle modification, various spices, various type of grains, various type of this herbs are recommended, and yes, Ayurveda, there is a lot good scope for Ayurvedic treatment in treating diabetes. Okay. Now, coming to, you mentioned dietary and lifestyle as well. So, what dietary recommendations does Ayurveda offer for diabetes? As I mentioned, that diabetes is basically all the three doshas are involved, Kapha, Pitta, and Vata. But in the beginning, this is mainly the Kapha dosha is involved. So in the whole pathophysiology of disease, the Kapha and made is lipid, and clay, the water content of the body, which is ultimately responsible for excessive amount of passing the urine. So one should take diet which is not sweet in nature, which is not uh, 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 unctuous, which is not having cold potency, so it should not be heavy, otherwise it will increase the cough content in the body. So when we talk about the diet, our diet should be that it should not further provoke our cough dosh in the body. Secondly, lot of emphasis is given on grains like barley, जिसे हम जौ कहते हैं. So there is a preparation apoop, that is the barley made cake. So that is recommended. Flour, various preparation of the barley flour are recommended. And it is also mentioned if the barley is dipped overnight in trifla decoction and then next day it is prepared, then it has further potentiated the hypoglycemic activity of barley. बहुत स्टडी हुई है, क्लिनिकल एक्सपेरिमेंटल बहुत स्टडी हुई है, और ये देखा गया है कि बार्ले को त्रिफला के पानी में रात को भिगा दीजिए और सुबह उसको फिर डिफरेंट ईटेबल आइटम के रूप में तैयार करिए, तो इट हैज शोन मिरेकुलस रिजल्ट ऑन
controlling the blood sugar, on taking care of the dyslipidemia, because disturbed made the dyslipidemia is one of the main reason for precipitating this disease condition. अगर हम दालों की बात करें तो दालों में जो है ग्रीन ग्राम विच इज मूंग, मूंग इज रिकमेंडेड, अरहर इज रिकमेंडेड, कुलथ की दाल इज रिकमेंडेड, एंड among the vegetable ग्रीन लीफी वेजिटेबल, देन ये जिसको हम करेला कहते हैं, बिटर ग्राउट, और मोमोर्टिका चेरेंटिया, सिमिलरली ये चचिंडा जिसको बोलते हैं, स्नेक ग्राउट, इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड among the वेजिटेबल्स. इसके अलावा फ्रूट्स, द बेस्ट फ्रूट इज जामुन. Okay. जामुन, या जामुन, एप्पल, गुआवा, फालसा, पॉमरग्रेनेट, ये सब फल जो है डायबिटीज के पेशेंट को, क्यों? क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड जो है वो कम होता है, इसलिए इनको आसानी से जो है वो लिया जा सकता है. तो डाइटरी मॉडिफिकेशन की जब हम बात करें तो हमें ये ध्यान में देना चाहिए कि वी शुड टेक सच आइटम which have low glycemic index and low glycemic load. Best item, Okay. as I told you about jaw, similarly ये जो है आपका पहाड़ में बहुत होता है मडुआ, साउथ में जिसको रागी कहते हैं, कोदो, कोदो इज ऑल्सो ए वेरी गुड. इट ऑल्सो टेक केयर ऑफ द डिस्लिपिडीमिया, ब्लड शुगर डिस्टर्बेंस, एंड सेंसिटाइज करता है इंसुलिन को टू मेटाबोलाइज द ब्लड ग्लूकोज लेवल. Okay, interesting. So that was a lot of good information. Largely, the key from what I heard was, you consume foods that are lower in the glycemic index, and also food that does not encourage the development of kapha dosha in the body. So that can mean, barley is highly studied, highly effective. Grams, green leafy vegetables, even fruits like jamun, apple are highly effective. This यहाँ तक कि information, जो कृतिका जी, जो हमारे किचन के मसाले हैं उसमें yes, हल्दी है, मेथी है, धनिया है, जीरा है, बहुत काम हो चुका है क्लिनिकली, एक्सपेरिमेंटली. हींग है, और इनका ब्लड शुगर लोअरिंग एक्शन, डिस्लिपिडीमिया पे एक्शन, इंसुलिन प्रमोशन जैसा एक्शन जो है वो वेल एस्टेब्लिश्ड है. बहुत पब्लिकेशन अवेलेबल है क्लिनिकली और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में. ये मसाले बहुत अच्छे amazing. हैं. जी हाँ. So, for those of you who are skeptics out there, there are scientific proven like papers out there that encourage and support what we are talking about right now. And also with the food that we consume, with the lifestyle choices we make, these are proven facts that Ayurveda has. So, moving on, Dr. Chandola, are there any specific herbs used in Ayurveda for diabetes? नंबर ऑफ हर्ब्स. बेस्ट इज त्रिफला विच इज Okay. कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ड्रग्स, जिसमें ये हरित की हरड़, टर्मिनेलिया चिबुला, बीबीतक, और बहेड़ा विच इज टर्मिनेलिया बेलेरिका, एंड थर्ड इज आंवला, फिलेंथस Okay. एम्बलिका, है ना, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, दोनों नाम है इसके. तो इस पे भी बहुत क्लिनिकल एक्सपेरिमेंटल स्टडी हुई है. त्रिफला हैज शोन गुड एक्शन ऑन रिड्यूसिंग फास्टिंग एंड पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द डिस्लिपिडीमिया. गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है. त्रिफला पे भी बहुत काम हुआ है. इसके अलावा वंडरफुल ड्रग इज विजय सार. विजय सार का पेड़ होता है, उसका बार्क निकालने के बाद जो अंदर का हार्टवुड है उसको डिकॉक्शन के रूप में यूज करते हैं. दैट इज टेरोकापर मार्सूपियम. एंड इंसुलिन पैदा करने वाले बीटा सेल जो है उनके ऊपर रीजनरेशन टाइप का एक्शन भी विजय सार का वेल एस्टेब्लिश्ड है. इन गिनी पिग में बहुत स्टडी हुआ है, ह्यूमन बीइंग में बहुत स्टडी हुआ है. टाइप 1 टाइप 2 दोनों तरह के जो पेशेंट हैं डायबिटीज के, उसमें विजय सार के बहुत अच्छे रिजल्ट वेल एस्टेब्लिश है. गुड़मार जिसको आप जीभ पे रखिए फिर स्वीट टेस्ट किल हो जाता है, तो दिस इज गुड़मार और मधुनाशिनी, ये बहुत अच्छी ड्रग है, और इसको मेष श्रृंगी भी कहते हैं, और इस पर बहुत काम हुआ है. इट इज ऑल्सो वेरी गुड ड्रग फॉर ब्लड शुगर डिस्टर्बेंस एंड डिस्लिपिडीमिया. इसके अलावा मामेजक, एनिकोस्टोमा, लिटोरेल, इसका नेफ्रोपैथी के ऊपर भी बहुत अच्छा एक्शन है, ब्लड शुगर के साथ साथ, डिस्लिपिडीमिया के साथ साथ. और इसके अलावा पहाड़ों में बहुत होता है दारू हरिद्रा, दारू हल्दी इसको कहते हैं, बेरबेरिस एरिस्टेटा, गिलोय गुडुची, जिसने काफ़ी जो है, जब ये कोविड का प्रॉब्लम हुआ उस समय इम्यूनिटी के लिए गिलोय पे बहुत बात हुई. तो इस गिलोय में भी और दारू हरिद्रा में भी बेरबेरिन होता है, और Okay. ये बीटा सेल को भी स्टिमुलेट करके इंसुलिन रिलीज करता है,
इंटेस्टाइन से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को भी कम करता है, पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बढ़ाता है, हिपेटिक लीवर में जो ग्लाइकोजन का जो फॉर्मेशन है उसको प्रमोट करता है। तो इट इज ऑल्सो ए वंडरफुल ड्रग। तो सिंगल ड्रग पे भी बहुत काम हुआ है, और आप अपने अपने लोग जो है वो फॉर्मुलेशन डेवलप कर सकते हैं, जिसमें वो गुडुची है या शिलाजीत है, इन सबको मिला करके ओन फॉर्मुलेशन डेवलप कर सकते हैं। एंड ऑल दीज हर्ब्स आर इको फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव एंड टॉक्सिसिटी फ्री। इसको आप एज ए सिंगल ड्रग भी यूज कर सकते हैं, पॉली हर्बल कम्बिनेशन के रूप में यूज कर सकते हैं, और अगर कोई कन्वेंशनल ड्रग के साथ भी उसमें यूज कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ हर्ब्स आर देयर। Okay, very interesting. That is a lot of also rich information, Doctor. So, is there any online resource where our audience can find out more about these herbs and information? गूगल में सब अवेलेबल है, सब रिसर्च है आजकल तो। जितने भी पबमेड वगैरह में भी सब ये रिसर्च पेपर अवेलेबल हैं, और आप क्लिक करिए और सब आपके सामने फाइंडिंग पब्लिश पेपर की आ जाएंगी। Okay. And speaking of, the online resources, livayo.com also has an extensive collection of ebooks, not just on diabetes that we're talking about today, but on various health conditions. We've pasted the link on the chat box, so please feel free to check that out. Now, moving on to the next question. So it is relevant and a very known topic that lifestyle influences the way we live, and lifestyle also has an impact on diabetes. So how does Ayurveda address lifestyle changes for diabetes? बहुत अच्छी बात पूछी आपने कृतिका जी। आयुर्वेद में जब पॉजिटिव फैक्टर की बात होती है, तो आयुर्वेद में ये बताया है कि किस तरीके से जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है वो बहुत बड़ा कारण है कफ दोष के एक्युमुलेशन का और डायबिटीज के प्रेसिपिटेट होने का। तो Okay. यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ टू कोप अप विद द प्रॉब्लम ऑफ द सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। दूसरी बात यह है कि जितने भी जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, आयुर्वेद में बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि क्रोध, एंगर, शोक, ग्रीफ, चिंता, दैट इज वरी और एंजाइटी, ये Hmm. सब जो साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं, ये Hmm. भी डायबिटीज के कॉज के रूप में बताए गए हैं। तो ये Okay. जो स्ट्रेस वाला जो पार्ट है, कहीं ना कहीं ये उसकी तरफ इशारा करता है। तो हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी होनी चाहिए कि वी शुड काउंटरएक्ट द प्रॉब्लम ऑफ दिस सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। तो रेगुलर एक्सरसाइज करें, एंड स्ट्रेस का मैनेजमेंट करें। इसके लिए देयर आर अनेक रिलैक्सेशन टेक्निक। और ये जो बहुत अच्छा रेफरेंस है कि अगर आप कोई पथ्य डाइट भी ले रहे हैं, होलसम डाइट भी ले रहे हैं, और आप नाइट अवेकनिंग, क्रोध, शोक, इससे इन्वॉल्व हैं, तो आपकी अग्नि डिस्टर्ब हो जाती है। तो Okay. ये प्रॉपर मात्रा में लिया हुआ भोजन भी डाइजेस्ट नहीं होता है। देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आर्म, एंड दिस आर्म फॉर्मेशन इज अ हिस्टोटॉक्सिक सब्सटेंस दैट इज द रूट कॉज फॉर ऑल द डिजीज कंडीशन। तो ये बताता है कि ये जिसको आजकल हम लोग फ्री रेडिकल के अंतर्गत भी समझने की कोशिश करते हैं। Hmm. इसीलिए वन शुड हैव फीलिंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। तो Okay. स्ट्रेस का मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मेडिटेशन वगैरह तो अपनी जगह है, लेकिन जो आयुर्वेद की जो मेद्य मेंटल हेल्थ प्रमोटिंग ड्रग है, उसका भी हमको थोड़ा सेवन करना चाहिए। जो हमारे अपने अपने रिलीजन के जो टेक्स्ट हैं, स्क्रिप्चर हैं, उसका स्टडी करना चाहिए। एंड बताया गया है कि वॉकिंग, सुश्रुत ने कहा है 100 योजन रोज चलना चाहिए। अब 1 योजन जो है वो 8 मील के बराबर होता है। तो देखिए दैट शोज कि कितना एम्फेसिस ब्रिस्क वॉकिंग के ऊपर सुश्रुत ने दिया। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, वन शुड हैव ब्रिस्क वॉकिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटी। रेसलिंग की भी बात करी है, जो बहुत लेमैन टाइप के हैं, उनको कहा आप कुआं वगैरह खोदिए। फिजिकल आपका जो एक्सरसाइज है वो होते रहना चाहिए, रिलैक्सेशन होते रहना चाहिए। स्विमिंग वगैरह भी इसमें बहुत हेल्प करता है। तो मेन ये है कि जो भी हम कैलोरी, हाई कैलोरी नहीं लेना चाहिए, ले भी रहे तो किस तरीके से बर्न हो जाए एक्सरसाइज के द्वारा, इसलिए इसमें देखना चाहिए। और स्लीप प्रॉपर होना चाहिए। लोग ध्यान नहीं देते हैं स्लीप पे। तो स्लीप का मतलब ये है
कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी हो, सुबह उठें तो देयर शुड बी फ्रेशनेस आफ्टर अवेकनिंग, तो क्वालिटी ऑफ स्लीप शुड बी गुड, रिलैक्सेशन शुड बी देयर। एंड इसके अलावा जो वेरियस टाइप के जो पंचकर्म, जो बायो प्यूरिफिकेशन के जो मेजर, उसको भी करना, अभ्यंग है, स्नेहन है, स्वेदन है, ताकि मसल भी रिलैक्स रहे, सर्कुलेशन इंप्रूव रहे। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के द्वारा भी जो है, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट के द्वारा और एक्सरसाइज के द्वारा हम अपना इसको मैनेज कर सकते हैं। Okay. So it's not just about physical well-being as well, it is also about mental well-being and sleep. So physical exercise, being mentally healthy, and also sleeping and getting quality sleep is just as important as a lifestyle factor as anything else. So it's not just for diabetes, it's really for any disease that can happen. These three points, which is physical exercise, mental well-being, and enough quality sleep, all contribute to that. और जितना भी आजकल हम जो योग की बात करते हैं, उसको भी अगर Correct. हम इसके अंतर्गत ले लें, वेरियस योगासन पे काम हुआ है, त्रिकोण आसन Yes. है, पश्चिमोत्तासन है, पातल आसन है, भुजंग आसन है, सर्वांग आसन है, पवन मुक्त आसन है, योग मुद्रा है, कपाल भाती है। बहुत, कृतिका जी, बहुत रिसर्चेज हो चुकी हैं, बहुत Yes. रिसर्च पेपर पब्लिश हैं कि किस तरीके से ये ओबेसिटी, ओवरवेट, डायबिटीज, इन सब के ऊपर इन योगासन का और मेडिटेशन, प्राणायाम, इन सब का जो है एक्शन वेल स्टैब्लिश है। और कई एक्सरसाइज ऐसी है कि पेंक्रियास में प्रेशर पड़ता है तो इंसुलिन भी रिलीज होता है। कपाल भाती वगैरह में तो सीधे ब्रेन का ऑक्सीजनेशन हो रहा है और उससे काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है। भ्रमरी प्राणायाम है, बी ब्रीदिंग हम कहते हैं। ऐसी Correct. जो है नाड़ी शोधन है, जिसमें हम अल्टरनेट नॉस्ट्रल से जो है वो ब्रीथ करते हैं। तो वेरियस टाइप के जो योगासन है, यौगिक मेडिटेशन, फिजिकल आसन एंड प्राणायाम, उनको भी हम इसके अंतर्गत लेकर के लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के अंतर्गत उसको भी हम ले सकते हैं। आयुर्वेद में कहा है नासा ही शीर्षो द्वारम, ये नॉस्ट्रल है, दैट इज एंट्री पॉइंट ऑफ द ब्रेन। तो जो इससे डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशन भी जो होने वाले होते हैं, जो न्यूरोलॉजिकल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं, उसके लिए भी जो है ये प्राणायाम और कपाल भाती वगैरह बहुत अच्छे हैं। वेरी Absolutely, गुड। Doctor. Thank you for mentioning, yoga and the various aspects that yoga also brings in. And it's just 15-20 minutes of your day that you have to invest in your own health, and it'll have multifold results for you. So coming to, I'm sure some many people have this question, which is Ayurveda safe for diabetes patients taking conventional medicines? See, there is no conflict. Both Ayurveda and Western conventional medicines are, I feel, complementary and supplementary to each other. Okay. Please try to understand, people should know that when we say type 1 diabetes, which is described as जातः प्रमेही मधुमेहिनोवा और सहज प्रमेह, बच्चा पैदा हुआ डायबिटीज हो गया, स्कूल गोइंग एज में है डायबिटीज हो गया। तो ये जो जेनेटिक पैराडाइम है डिजीज Mhm. का, यहाँ पेशेंट जो है इंसुलिन डिपेंडेंट है, हमको इंसुलिन देना ही पड़ेगा। कोई ये कहता है कि मैं ओरल से ठीक कर दूंगा, स्वयं को धोखे में रखने वाली बात है। इसलिए मैंने आपसे कहा बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। लेकिन अब आप जानते हैं कि इंसुलिन के भी बहुत साइड इफेक्ट हैं। इंसुलिन Yes. रिड्यूसेस द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI. The Yes. incidence of myocardial infarction is much more high in those patients who are on insulin therapy because insulin reduces the cell mediated immunity. तो यहाँ पे अगर हम पेशेंट जो इंसुलिन पे चल रहा है उसके साथ आयुर्वेद की अपनी हर्ब या पॉली हर्बल या हर्बो मिनरल प्रिपरेशन दे दें तो इंसुलिन का रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगा, इंसुलिन के जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो भी मिनिमाइज हो जाएंगे, इंसुलिन का एक्शन भी पोटेंशिएट हो जाएगा, कम मात्रा कम डोज से काम चल जाएगा। इसलिए उसके साथ में आराम से लगा सकते हैं। टाइप 2 पेशेंट जो है, जो कहीं ना कहीं ओरल इंसुलिन प्रमोटर ले रहे हैं, उसके साथ Okay. भी अगर हम आयुर्वेद का सपोर्टिव मेडिसिन लगा दें तो एक्सोजेनस रिक्वायरमेंट ऑफ दीज मॉडर्न केमिकली सिंथेटिक ड्रग, इसका रिक्वायरमेंट भी कम हो जाता है, एक्शन भी पोटेंशिएट हो जाता है, और जो इनके द्वारा होने वाले एडवर्स इफेक्ट हैं
वो भी काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाते हैं आयुर्वेद के सपोर्ट से। अब ये दिस डिपेंड अपॉन द विजडम ऑफ द फिजिशियन कि Mhm. कहाँ हमको पेशेंट को अकेले आयुर्वेद से मैनेज करना है, कहाँ हमको उसको जो कन्वेंशनल मेडिसिन पेशेंट ले रहा है उसके साथ आयुर्वेद को सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में लगा देना है। तो दैट डिपेंड अपॉन विजडम ऑफ द फिजिशियन। अलबत्ता Okay. बोथ आर सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कहीं कोई विरोध नहीं है। Okay, fantastic. I think a lot of people will benefit from that knowledge who are thinking, which direction to take. Now, doctor, is there any online resource that is trustable where someone can understand the risk of being diagnosed with diabetes? Yes, yes, there are various risk factor of diabetes. Any That means tool, doctor, to tool, understand? yes, yes, tool is Imami, Jandu Imami has prepared the tool and they have placed it on Live Okay, and that is available there. One can okay. go through that and calculate whether he comes under the risk for diabetes, because diabetes, pre-diabetes, metabolic syndrome, obesity, ये सबका जो combination है वो सब Mhm. इस प्रमेह के अंतर्गत जो है वो वेल डिफाइंड है। और Okay, मधुमेह इसकी टर्मिनल स्टेज है, ये समझना बहुत okay, जरूरी है। इसलिए रिस्क फैक्टर अगर टूल के द्वारा, ये जो आयुर्लिव में जो वेबसाइट में है, इसके द्वारा यदि कोई अपना स्केल से देख ले, he can ascertain whether I come under the category of risk factor, so he okay. can adopt the preventive and promotive measure to avoid the onset of disease. Okay, fantastic. So, audience, if you are curious, Livire.com has a diabetes risk calculator. This tool is personally worked on by Dr. Chandola, so you can go ahead and trust it. And the link to this tool will be shared in the chat box below. Now we are almost on time, so we'll take one final question, which is, Doctor, how long does it take to see results with Ayurvedic treatments on diabetes? See, if the diagnosis is perfect, if the medicines are genuine, Hmm. result will be visible, Okay. because it is a multifactorial disease. इसमें आप ऐसा मत समझिए कि सिर्फ ब्लड शुगर का ही डिस्टरबेंस है। इसमें ब्लड शुगर का डिस्टरबेंस तो है ही, इसके साथ साथ लिपिड मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब है, Hmm. डिफरेंट ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि डायग्नोसिस सही है, मेडिसिन जेन्युइन है, तो Hmm. विद इन 2 वीक्स, विद इन 15 डेज आपके Hmm. सामने पेशेंट को सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट और जो डिवाइसेज हैं, ब्लड शुगर, फास्टिंग, पोस्ट पेरेंडियल, इसमें भी आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बट Okay. जैसे मैंने आपसे Fantastic. कहा, द क्वालिटी मेडिसिन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Quality इसलिए medicine पेशेंट and को the right अच्छी diagnosis as फार्मेसी की well. दवाई देखनी चाहिए, जेन्युइन मेडिसिन हो, Hmm. तो रिजल्ट आपको मिलता है। That's great. Within That's great. 2 weeks you will see the result. Okay, so 2 weeks is a good marker when you have the right diagnosis and good quality medicine. Yes. So, unfortunately, this is all the time that we have. We're almost at the end of our session. Now, that was a truly insightful session, Dr. Chandula. Thank you so much for being here and for sharing such detailed information. I'm sure the audience will greatly benefit from this session and all the sessions that will come. I'd also like to thank the audience for being a part of this. We hope you enjoyed these sessions that we do for you. Now, with this, we'd like to end the session here. Audience, you can visit the Livire website and follow our social media handles for regular updates on all things Ayurveda and the Ayurvedic lifestyle. Thank you, everybody. If you have any questions, we'll answer that for you. But as of now, this is the end of the session. Thank you, everyone, and thank you, Dr. Chandola, for being here with us. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone.